Hello everyone. I am from the team of IQ Magnets. IQ Magnets is a digital branch of Quasra Tuition Center. You can check the description box for more details about IQ Magnets and you can book your first free trial there as well. So let's begin. So here what I'm trying to do, I'll try to teach you the first chapter of ICSE Economics. This chapter will be rolled out in certain parts. You can enjoy all the parts for free. But after that, if you want to join our sessions, you can book your slot at IQ Magnets. So let's begin. This particular session is going to be very interesting. If you are very new to economics, I'll be telling you some basic terms and also I'll be sharing my pro tips that I have followed as a student and which you can follow to secure the maximum marks. So let's begin. Tip number 1. So tip number 1 is very close to my heart and I usually give it to all my students in the very beginning. The basic problem that all the students who are very new to economics face is that they fail to understand that which words are keywords and which words are not the keywords. And they end up treating all the words in a very similar fashion. So what you have to do? You have to spend first 2 or 3 classes to understand that how you are going to pick the keywords, right? Okay. So I'll just give you an example and you have to see it for yourself that how placing certain keywords in the sentence will help you, right? Okay, let's start. Sentence number 1. So if I want to say that, let's say, a lot of people are out of jobs. Okay, this is my statement. Now, this is a perfectly correct statement. This statement has no errors. But still, if you will write this statement in your economics exam, you will end up losing a lot of marks. This is a very common mistake that a lot of new students do. But that's how we will create a difference. We'll try to train you. You have to change how you write. Okay, let's see how we can make it a little better, how we can refine it. So what you have to do is this sentence is in the language of English. You have to convert this sentence in the language of economics, right? Okay, let's do it. So I want to say that there are a lot of people who are out of their jobs or they don't have their jobs anymore. So I can say that unemployment rate is high. So this is what economics will try to teach you. The moment I will tell you anything about economics, you will have one term for it. You will have one example for it right in front of you. I'll tell you, okay, see, have you ever seen a supermarket? You will say yes. So I'll tell you how the supermarket works, how the economics of supermarket work, and you will be able to relate. So the basic idea is that whatever we will do in economics, you will be able to relate it, right? You will be able to see, okay, this is there in my environment, but oh, this has one economic name. This has one economic law related to it, and you will be fascinated by it. All you need to do is just keep your mind a little open, right? Okay. So this is my first statement. People are out of jobs and how I have converted it. If I'm writing an economics paper, I'll say that unemployment rate is high. So the keyword is unemployment. Rate is a very important word in economics that is used here and there. Then either it's very high, I give a status to it. Either it's very high or it's very low or it's moderate. So this is very important. Okay. So we'll spend few classes highlighting the keywords. I'll help you with the keywords. After that, you will be trained. You will be trained to notice, to observe, and then to add keywords in your answer as well. And then you will see that how your score is now very different from what you were scoring earlier. Okay. So now tip number 2. So second tip is not actually a tip, but actually what you have to understand about each and every topic. Only then you have to move ahead to the other topic. So the moment I'll give you any topic,
Suppose you have to understand about the topic of demand. You have to look out for the definition or the meaning, either of the two, and sometimes both the things also. Then you have to see certain example. You have to wait for the example to come in your notebook, or you have to ask for the example. Okay, you are telling me this thing exists. This demand sort of thing exists. So please tell me an example also. This is how you have to change your approach now. You have to ask for things. Then you have to see some table. So these two things are going to be there, definition and example. Table, diagram, numericals, thought questions. These will vary from one topic to the other, right? Sometimes you will have tables, sometimes you will have diagrams, sometimes you will have both. So that depends, right? Okay. So just look out for these 6 things whenever you are doing any topic. After that, your topic will be done. I know it's a lot of work, but then there is no substitute to hard work. Let's begin. As all of you are doing economics for the first time, some of you must have done it as your optional in 10th standard. For those students, this is going to be easy. But it's very important. We can't really skip even if you know a little bit of economics. If you know economics, let's take it as a revision. Okay. So let's start. So I have 2 terms here, economics and economy. Now, a lot of people interchange them. That's the terrible mistake that we don't have to commit. We have to look out for the finest line of difference between the 2 words. We have to see what is the difference between the 2 words. Okay. Let's start. For that, I'll switch to the next slide because there I have the definition. Yeah. So this slide is basically telling me the definition of the term economics. So before actually looking at the definition, I just want you guys to stop and think. जब आपको पेपर का वो बोलते हैं कि आपका एग्जाम है, आपकी डेट शीट आती है, या जब आपको बोला गया था यू हैव टू पिक अ सब्जेक्ट, तो आप क्या करते हो? आपने कभी इकोनॉमी देखा कि इकोनॉमी इज योर सब्जेक्ट? नो, आपने क्या देखा कि आपको क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स. आपकी डेट शीट में, आपके पेपर ऑप्शंस में, आपके सब्जेक्ट चॉइसेस में हमेशा क्या लिखा होता है? कौन सी टर्म होती है? द टर्म इज इकोनॉमिक्स, नेवर इकोनॉमी. सो इकोनॉमिक्स हैज टू बी अ सब्जेक्ट. ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स अ सब्जेक्ट. चलो, लेट्स लुक एट द डेफिनेशन. What I will do is I'll dissect the definition for you guys. Now, economics is a social science. अभी बोला ना कि वो subject है science. Why is it a science? Because you will encounter a lot of laws under it. You will see a lot of laws which are at play when we are doing economics. And then you will see that it's social science. Social का मतलब क्या होता है? Something which is related to society. Something which is related to humans. जहाँ पे मशीन्स वगैरह नहीं है, बट ह्यूमंस रिलेटेड हैं. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी. सो इट्स अ सोशल साइंस रिलेटेड टू द सोसाइटी. अब यार आपका कोई सब्जेक्ट होता है, व्हेन यू हैव एनी सब्जेक्ट, व्हाट डू यू आल्सो ऑब्जर्व? दैट सब्जेक्ट हैज सम एम और सम स्टडी गोल, है ना? अदरवाइज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग एनी सब्जेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, you do chemistry, you have done chemistry till class 10th also. So you know, chemistry is all about understanding more and more about chemicals every day. Chemistry doesn't stop. It keeps understanding, keeps innovating, keeps telling you about more and more chemicals. Right? Then we know mathematics. Mathematics has an aim. Science as a subject, it also has certain different aims. Biology has some aims. Similarly, when economics became one subject, it also came with a set of aims. ठीक है, हमें समझ आ गया सब्जेक्ट है. अब हमें क्या लिखना है कि यार एम क्या है, ये भी बता दो कि व्हाट इज द एम. सो इसका एम क्या रहता है? द एम इज टू फुलफिल मैक्सिमम वांट्स. क्या फुलफिल करना है? आई वांट टू फुलफिल मैक्सिमम वांट्स. ओके, अब यार वांट्स फुलफिल कर लेते हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई इज दिस बिकमिंग अ सब्जेक्ट? वांट्स ही तो है. वांट्स मतलब जरूरत है. वांट्स ही तो पूरी करनी है, कर देते हैं. व्हाट इज द बिग डील? सो बिग डील ये है कि वांट्स पूरे करने के लिए लगती हैं रिसोर्सेस. वांट्स कैसी हैं? व्हाट इज द प्रॉपर्टी विद वांट्स? दैट यू वांट टू फुलफिल मैक्सिमम वांट्स, मैक्सिमम. और रिसोर्सेस के साथ व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट दे आर
either minimum, I will not say minimum, I'll call them limited, I'm sorry. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है while you want to fulfill maximum wants. So this is a constant tussle, एक हमेशा की एक लड़ाई रहती है कि wants अरे खत्म ही नहीं होती, resources हाथ ही नहीं लगती. So this is the problem, this is the gap that economics try to bridge. ठीक है, economics हर जगह है, it's applicable everywhere. It's applicable to a household, then it's applicable to a big company which is trying to survive or trying to make profit, and then it's applicable to the country, a big country, and then it's applicable to the world as well. So economics is applicable everywhere at each and every scale. Small scale like household also, company, country and the world. ठीक है, हम एक बार household का example देखते हैं. Let's say that you got 25,000 scholarship. ठीक है, 25,000 worth of scholarship you have got. Amazing, that's great. Now 25,000 is a lot of amount, but it's not everything. Now you will have a lot of wants also. तो अब यार आप क्या करोगे? आप एक स्टूडेंट हो, आप कौन सी वॉन्ट्स पूरी करोगे? आप ये नहीं करोगे अच्छा ओके आई एम 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आई शुड हैव अ लाइफ इंश्योरेंस और अ मेडिक्लेम. यू वुड नॉट थिंक लाइक दैट. आप क्या करोगे? आप क्या खरीदोगे पहले अपनी वॉन्ट से? मे बी यू वॉन्टेड टू बाय सम सॉर्ट ऑफ notes online, some sort of study material online, some sort of gadget. Maybe you wanted to buy a gadget because you have your online classes or something. So you will buy that. Then maybe you wanted to buy some piece of uniform, some very important piece of uniform. Something related to your school you will buy maybe. है ना? Because these are your priorities. तो जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं, अब आपकी wants बहुत सारी हैं. You have a lot of wants, n number of wants. They are never ending. बट आप पहले कौन सी फुलफिल करोगे उस पैसे से जो सबसे जरूरी है, विच आर रियली इंपॉर्टेंट, विच यू नीड टू फुलफिल एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, आप पे डिपेंड करेगा. वैसी कंट्री का होता है यार, जैसी कंट्री के पास पैसे आते हैं या रिसोर्सेज आते हैं वो उनको अपने हिसाब से खर्च करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस कंट्री विच इज वेरी अंडर डेवलप्ड. ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं तो दे विल स्पेंड ऑन देयर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक हाइजीन, मे बी ऑन हाइजीन, मे बी ऑन बेसिक एजुकेशन. They will not start building colleges. ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? They will start from the bottom. कि ओके एजुकेशन बिल्कुल ही नहीं है तो स्टार्ट फ्रॉम दी बॉटम. थोड़े साल बाद जब धीरे धीरे लोग बड़े होंगे तो हम लोग मे बी कॉलेजेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट वो ये नहीं करेंगे कि देयर इज नो एजुकेशन सिस्टम, पैसा आया चलो लेट्स मेक कॉलेजेस. वो नहीं कर सकते. कॉलेजेस ऑब्वियसली उनके कॉलेजेस भी उनकी एक वांट होगी, इट विल बी अ वांट फॉर देम एज वेल, बट they can't just jump to the last want. They'll have to start from the basic ones. That's why you win in economics. That's how you basically win in economics. Because wants बहुत सारी हैं, resources आपको थोड़ी बहुत ही मिली होंगी, limited मिली होंगी. तो मान लो आपको resources मिली 25,000, आपकी wants शुरू है N1, N2, these are your wants. And you can, from 25,000, you can fulfill only first two wants, N1 and N2. तब उनको पहले fulfill कर लो, बाद में देखेंगे. अब सीधा लास्ट वाली जो वांट है उस पे जंप नहीं करोगे. ठीक है, ओके. सो आवर एम इज टू फुलफिल मैक्सिमम वांट्स यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज. नाउ दिस इज द फाइट कि रिसोर्सेज क्या है हमारी? लिमिटेड. ओके फाइन. सो आफ्टर दिस आई जस्ट वांट टू शो यू सर्टेन सिनेरियोज. आई विल जस्ट शो यू द सिनेरियोज इन अ बिट. ओके, लेट्स सी द सिनेरियोज नाउ. अभी हमने क्या बोला था? देयर आर मैक्सिमम वॉन्ट्स एंड और अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. लेट्स टेक अ केस वेयर आई हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वॉन्ट्स. नाउ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, बहुत पैसा है, सारा कुछ बहुत है, सारी रिसोर्सेज बहुत है, बट जो आपकी वॉन्ट्स हैं वो क्या है? दे आर लिमिटेड. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वेरी आइडियल सिचुएशन, ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगी. सेकंड सिचुएशन देखते हैं. मे बी यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स. तो ये भी कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है एज कंपेयर टू द सिचुएशन वेयर वी आर. कौन सी सिचुएशन में हम? लिमिटेड वॉन्ट्स
unlimited wants and limited resources. That is a very big problem. That's why we are always fighting here, there, everywhere we are fighting. अगर ये दो सिचुएशंस होती तो आप फाइट ही नहीं करते, ये दो सिनेरियोज होते तो आप इतना फाइट मारते ही नहीं शायद. ठीक है. That's why economics is a very big subject, because we live in a world where your wants are unlimited and your resources are limited. This is very important. I have told you this a lot of times now, so I think it's clear. Okay. Let's start with the word economy, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि we'll start with economics and then we will look at economy. So as we saw that economics is all about a subject. Economy is a very different term and it revolves around the pattern of earning. क्या है ये आपका? Only pattern of earning. कि as a country, as a territory, as a unit, how are you earning? On what economic activity are you dependent on? तो ये सारा काम किस में आता है? इकोनॉमी में. ठीक है. वो चेक करता है कि यार आप कैसे पैसे कमाते हो, उसको सिर्फ इतना कंसर्न है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यार डज इकोनॉमी इंक्लूड योर कल्चर ऑल्सो? नो, इकोनॉमी डजंट केयर अबाउट द कल्चर. इट ओनली केयर्स अबाउट हाउ यू आर अर्निंग. व्हाट इज योर पैटर्न ऑफ अर्निंग? एज अ कंट्री, आर यू डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर? फॉर एग्जाम्पल इंडिया. सो इंडिया इज नोन एज एग्रेरियन इकोनॉमी. ठीक है. इंडिया को हम बोलते हैं कि आप ऐसी इकोनॉमी हो विच इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट यू नो Indian economy is very different from that of Chinese economy. Why? Because India की जो economy है, it's dependent on agriculture, whereas China की जो economy है, it's dependent on manufacturing sector. तो ये आपकी economy है. Economy just cuts everything. It doesn't care about any other aspect. It only cares about how are you earning. What is your pattern of earning? So economics is a very different term. Economy is a very different term. Okay. Let's come to other basic things now. So I wanted to talk about resources and wants. I wanted to show you a contrast between resources and wants. ठीक है. कंट्रास्ट क्यों है? क्योंकि यार ये जो दो चीजें हैं जिनके बीच में कांस्टेंट फाइट चल रही है. फाइट इसलिए बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से बहुत ही अलग है. ओके. रिसोर्सेज क्या है? इट्स लिमिटेड इन क्वांटिटी. उनकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी लिमिटेड रहती है. नाउ जो आपकी रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वुड मिली, तो एज अ प्रोड्यूसर नाउ इट्स योर जॉब टू अंडरस्टैंड कि यार क्या बनाए. वेदर यू वांट टू मेक a table out of it, sofa out of it, what do you want to make, what kind of furniture do you want to make. तो ये पूरी constant fight रहती है. ये प्रॉब्लम तो है, लिमिटेड क्वांटिटी वाली प्रॉब्लम तो है. जो दूसरी प्रॉपर्टी है इट एड्स टू द प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम को कम कर देती है या प्रॉब्लम को वहीं रहने देती है, बल्कि इट एड्स, इट कंपाउंड्स द प्रॉब्लम. राइट. ओके. नेक्स्ट, वांट्स. अब यार यहां से हमने स्टार्ट किया था. सो वांट्स जो है वो आपकी अनलिमिटेड है. क्या है वो आपकी वांट्स? अनलिमिटेड. यू नेवर स्टॉप वांटिंग थिंग्स, यू वांट एवरीथिंग. तो आप हमेशा फाइट में रहते हो कि पहले कौन सी वांट आपकी पूरी करी जानी चाहिए. राइट. सो वांट्स आर अनलिमिटेड. नाउ दे आर ऑल्सो रेकरिंग. नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि वो बार बार रीअकर हो जाती है. आप एक वांट को खत्म करोगे, दूसरी वांट आ जाएगी. या फिर आपने पहले आपके पास होगा मे बी 2 years ago you wanted a really nice cell phone and you thought that will be it. After that your demands will stop, you will become the happiest person on the planet. But that doesn't happen. The moment you are given your cell phone, you want something else then. And maybe after 2 years, you are just fed up of that cell phone and you want a better version. So, why your wants are recurring? Because of technical changes. Either technical changes or changes in taste and preferences. Changes in taste and preference. इस वजह से हमारी जो wants है वो अनलिमिटेड है. नहीं तो और आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाती अगर ये रेकरिंग ना होती. अगर एक बार अच्छा ठीक है, नाउ यू हैव अ नोटबुक, इट्स डन फॉर लाइफ, अगर ऐसा होता. बट ऐसा होता नहीं है. यू आर नॉट डन बिकॉज इट विल एंड, इट विल फिनिश एंड देन यू वुड वांट अ न्यू वन. So this entire slide is trying to sum up that how problematic the world is
That's why, because of all these problems, we have a very beautiful subject called economics. Okay. After we are done with economics and economy, I'll be talking about two terms again. The first term is economic activity and the second term is non-economic activity. Okay. So activity is doing anything. You are doing something, right? Okay. Now what happens, whatever I do, I can divide my activities into two parts, either economic activities or they are non-economic activities. Right? Now what are economic activities? What all activities will fall under economic activities? So जैसे मैंने पहले बोला, economy, economics, it's all about money or it's all about resources. The moment you are doing something to earn profit or to get some money or some sort of monetary transaction is there, we will call it economic activity, right? और non-economic इसका बिल्कुल ही opposite है. तो कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो भी देख लेते हैं. रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग, परचेजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन. ये सारी एक्टिविटीज कौन सी हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी. आप प्रोड्यूस करते हो बिकॉज यू वांट टू अर्न समथिंग. आप परचेज करते हो बिकॉज यू वांट टू यू बेसिकली स्पेंड मनी बिकॉज यू वांट टू गेट दैट प्रोडक्ट. आप सेलिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन. All these words, producing, purchasing, selling, distribution, they're very important words. We'll look at their definition separately also. ठीक है, इसमें और क्या important है, which is a very important keyword here. बहुत सारे बच्चे goods तो लिख लेंगे, products तो लिख लेंगे, but they forget the other part also, which is services. Very important part. अपनी definition में आपको ये दोनों चीजें जरूर include करनी है. I'll just repeat it for you guys. So economic activity refers to the activities. उन्होंने थोड़ी सी एक्टिविटीज बता दी आपको, 4 एक्टिविटीज. स्टार्टिंग से स्टार्ट करो. प्रोड्यूस करना, परचेज करना, सेल करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना. किसका? ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? तो गुड्स, जो हमें दिखती हैं चीजें. गुड्स मतलब जो आपके जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, गुड्स. गुड्स को हम टैंजिबल्स भी बोलते हैं. टैंजिबल मतलब दैट दे आर विजिबल, यू कैन सी देम. They have some sort of physical property also. Physical property as in shape, size, packaging. उनको हम goods बोलते हैं. जैसे मान लो आपने comb खरीदी, you purchase the comb. So comb is a good, okay. But आपने अगर सर्विस ली, आपने अगर हेयर कट लिया, तो that is a service. Why? Because it's intangible. आप ऐसा नहीं करते ना कि आप हेयर कट बोलो, अच्छा मैं हेयर कट करा के आया हूँ, साइड में पड़ा है, गिरा मत देना. आप वो नहीं बोल सकते ना. Because it's intangible, you experience it, it's on your head, you experience it. और इसको हम intangible बोलते हैं. Intangible मतलब जो visible नहीं होता, something which is not visible. इसकी जो आपकी इसकी कोई physical property नहीं है. It will vary from one person to another. I will get some other sort of haircut. You will get some other sort of haircut. वो लोग ऐसे packed haircuts नहीं बना के रख सकते for everyone. कि अच्छा ये लो, ये वाला खरीद लो, वो खरीद लो. They'll just do it. हो सकता है the same person will do your haircut, you will get a fabulous one. Same person will do mine and they'll make a mistake. तो वो होता रहता है. ठीक है, तो ये सर्विसेज होती है. तो गुड्स के साथ you always have to mention about services. क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सिर्फ गुड के बेसिस पे नहीं चलती है, वो सर्विसेज के बेसिस पे भी चलती है. सर्विसेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप गुड्स करो, सर्विसेज करो, कोई भी एक चीज करो, बट इसमें क्या होना चाहिए? सम सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, समथिंग रिलेटेड टू मनी. ओके, दीज आर योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वो सारी एक्टिविटीज जिसमें मनी की कंसिडरेशन नहीं है. यू आर फेवरिंग समवन, यू आर हेल्पिंग समवन, and you have different intentions. You don't have the intention to get money out of whatever you are doing. Though all those activities are known as non-economic activities. ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते हो, आपका कुछ खाने का मन है, तो आप बोलोगे कि ओके आई वांट टू हैव अ पिज्जा. योर मॉम विल नॉट से ना कि हाँ मीडियम पिज्जा के इतने, लार्ज पिज्जा के इतने. ऐसा कुछ आपको प्राइसिंग नहीं मिलेगा, कोई मेन्यू नहीं मिलेगा.
So all those activities are non-economic activities. So they are performed without any consideration. Consideration का मतलब होता है in return. तो आपसे कोई expect नहीं करता कि in return में आप क्या दोगे. You will give some sort of financial gain. Financial मतलब पैसे से related आप कोई gain expect नहीं करते. Okay, they are initiated for personal content, for personal satisfaction basically. Content मतलब satisfaction. Or to meet human sentiments are economic activities. आपका sentiment था, you wanted to help someone, you just did it. So they are out of love, out of charity for someone who is in need. So this was the first part. After this, we'll roll the second part also. So please stay tuned, and if you like this video, you can visit IQ Magnets. We offer quite a few services. You can visit us there. You can book your free trial. We provide free online trial, first online trial. You can also see our pricing there. Hope you like this video. Please like, share and subscribe.